Sanjay Singh, who is under fire when it comes to the Liquorgate scandal, he has moved the Delhi High Court. Sanjay Singh has challenged the trial court order denying him bail. So that is the piece of breaking news that's coming in, where Sanjay Singh, Aam Aadmi Party MP, has now moved Delhi High Court. He has challenged the trial court order that has denied him bail. I'm joined by my colleague Ananya Bhatnagar on the broadcast. Ananya, give us the details. Well, definitely, Sanjay Singh has now knocked the doors of the Delhi High Court, challenging the trial court order which had denied him bail. And in fact, various observations were made when it comes to, Sanjay Singh's role, clearly saying that, he was somebody who was one of the conspirators. He was also one of those who was a key player when it comes to this whole liquor policy. And if you remember, that Sanjay Singh's name has cropped up in various charge sheets. And in fact, one charge sheet has now been filed against Sanjay Singh as well. The trial court had denied him bail even after a charge sheet was filed against him, noting that he had a clear role to play. And in fact, the trial court also went on to mention the Supreme Court's order denying Manish Sisodia bail in this particular case, wherein the Supreme Court had held that the money trail prima facie seems to be genuine in nature. The case of the enforcement directorate is clear-cut, very, very necessary. And you see, this comes at a time when Kejriwal is almost about to face a fourth summon from the enforcement directorate. He skipped all the three summons. The fourth summon is to come, is what we have been told by our sources. And very, very clearly, this move by Sanjay Singh, whether it would be fruitful, whether the High Court would be entertaining this particular petition, whether the High Court would be granting him a relief, is something that is a matter of time. We'll get to know only when the matter comes up for hearing before the Delhi High Court. But definitely this move comes in from Sanjay Singh at a time when Kejriwal is facing the ED heat when it comes to the Liquorgate scandal. Remember that it has been constantly mentioned that, Arvind Kejriwal is the convener of this party. Even when the Supreme Court was hearing this particular matter, a question was posed to the enforcement directorate as to why the Aam Aadmi Party, which has been accused that, a lot of money has been sent to the Aam Aadmi Party in lieu of those kickbacks that were received through this money trail. Why has the Aam Aadmi Party not made an accused? And it was said that the enforcement directorate is mulling on making Aam Aadmi Party an accused. And if at all Aam Aadmi Party is made an accused in this particular case, the convener of this particular party is Mr. Arvind Kejriwal, and he would have to face that ED heat. So we'll have to wait and watch for all of that. But at this point of time, Sanjay Singh moving the Delhi High Court, challenging the trial court order denying him bail. Also, Ananya, just take us through what are Sanjay Singh's arguments when it comes to challenging the trial court order. And secondly, when it comes to his role in the entire Liquorgate scandal, is his role centrally about arranging the kickbacks from the accused liquor barons when it came to framing of the liquor policy? Is that the clincher that the agency has against Sanjay Singh? Well, the agency has, in fact, a lot of material against Sanjay Singh. And if we go by the order that was passed by the trial court, it was very, very categorically, stated by the trial court while it was dismissing Sanjay Singh's bail. And I'll quote it from that order that the above evidence and material is also sufficient to furnish this court a reasonable grounds of believing that Sanjay Singh is guilty of the said offence under Section 45 of the PMLA. And thus, it can be said that the conditions laid down by the said section for grant of bail to the applicant in the present case are not satisfied. In fact, it also goes on to say that the statements of the approver and witnesses prima facie show that bribe or kickbacks were paid to Sanjay Singh. Remember that the enforcement directorate's allegation in that particular charge sheet against Sanjay Singh is that, he had received around 2 crores of bribe, and a confirmation call was also made to him, to which he confirmed that he has received that particular amount from some protected witnesses in this particular case, to which we cannot name. And it was also stated that, Singh directly or indirectly with the act was related to the activities of money laundering, and that's exactly why the trial court felt that, no bail can be granted to Sanjay Singh. However, Sanjay Singh has constantly been pleading before the trial court and now, in fact, before the Delhi High Court also that, he's a senior citizen. He's also a member of the parliament and there would be a lot of suffering to the people when it comes to, the Delhi High Court also would be arguing that, he is somebody who is having ailments and should be granted bail. He has no role to play in this particular liquor policy, and there is no iota of evidence available against Sanjay Singh, is what the legal team is pushing for. However, we'll have to wait as to how the High Court actually responds to this particular petition. Right. Thank you, Ananya, for getting us the latest. So, Sanjay Singh has moved the Delhi High Court against the trial court's order that denied him bail. Now, let's listen into Arvind Kejriwal, who has skipped the ED summons now 3 times and calls it a conspiracy to arrest him. मेरी सबसे बड़ी ताकत मेरी ईमानदारी है। झूठे आरोप लगा के, फर्जी सम्मन भेज के ये मुझे बदनाम करना चाहते हैं, मेरी ईमानदारी पे चोट करना चाहते हैं। इन्होंने मुझे सम्मन भेजे हैं,
मेरे वकीलों ने मुझे बताया कि ये समन गैर कानूनी है। जहां किसी पार्टी के नेता के खिलाफ ईडीआई सीबीआई के मामले चल रहे थे या उन पे गंभीर आरोप लगे हुए थे, जैसे ही वो नेता बीजेपी में शामिल हुए उनके सारे पुराने मामले बंद कर दिए गए या ठंडे बस्ते में डाल दिए गए। तो जो इनकी पार्टी ज्वाइन कर लेता है उसके सारे मामले रफा दफा कर दिए जाते हैं। बीजेपी का मकसद कोई पूछताछ करना थोड़ी है, इनका मकसद है पूछताछ के बहाने केजरीवाल को बुला लो और उसे गिरफ्तार कर लो ताकि मैं लोकसभा चुनाव में प्रचार न कर पाऊं। केंद्रीय जांच एजेंसी ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय के द्वारा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जल्द ही चौथा सम्मन भेजा जा सकता है और उन्हें पूछताछ के लिए ईडी मुख्यालय में बुलाया जा सकता है। ये ईडी मुख्यालय है और ईडी मुख्यालय की अगर बात करें तो ईडी मुख्यालय में ही पूछताछ की जो तमाम जो प्रक्रिया सामान्य तौर पे होती है। और जिस तरह से दिल्ली सरकार की जो पूर्व आबकारी नीति मामले में जिस तरह से भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था, तो इस मामले में अब तक जो 3 सम्मन भेजे गए उन तीनों सम्मन पर मुख्यमंत्री पूछताछ की प्रक्रिया में इसलिए नहीं पहुंचे। लिहाजा जो उनके जो जवाब है उस जवाब का जांच एजेंसी के द्वारा अध्ययन किया जा रहा है और उसी के आधार पर आज दोपहर तक उन्हें एक सम्मन भेजा जा सकता है। हालांकि हमारे सूत्र ये भी बताते हैं कि अगर इस चौथे सम्मन की अगर बात करें तो उन्हें एक ऑप्शन ये भी दिया जा सकता है कि वक्त मुख्यमंत्री बताएं, जगह बताएं और उसके बाद जांच एजेंसी की टीम जाकर के उनसे पूछताछ कर लेगी। हालांकि इस तरह का ही ऑप्शन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी दिया गया था। उन्हें भी कहा गया था कि आप जगह और वक्त आप तय करें और मुझे पता है कि आप काफ़ी व्यस्त होते हैं, तो हो सकता है कि आपको वक्त नहीं मिल पा रहा हो, तो आप जगह वक्त तय करें और जांच एजेंसी की टीम आकर के उनसे पूछताछ कर सकती है। तो इस तरह का ये ऑप्शन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को भी दिया जा सकता है। कि लगातार हम ये सुनने को मिल रहा है कि अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट किया जाएगा। भाजपा के अपने नेता लगातार ऐसा बोल रहे थे। हमारे 3 नेताओं को बिना किसी सबूत के इतने लंबे टाइम तक जेल के अंदर रखा हुआ है। तो क्योंकि ऐसा इसलिए है क्योंकि भाजपा नीतियों में अरविंद केजरीवाल जी का मुकाबला नहीं कर सकती और लगातार ऐसी कोशिश उनकी जारी है। आज अरविंद केजरीवाल न केवल भगोड़े नंबर 1 और भ्रष्टाचारी नंबर 1 है, बल्कि इनकी पूरी पार्टी ड्रामेबाज नंबर 1 है। आप भगोड़े बनकर फिर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं। कभी आप कह रहे चुनाव में व्यस्त है, कभी कह रहे विपासना में व्यस्त है, और उसके बाद आप एजेंसीज को डिक्टेट कर रहे हैं कि ऐसे एजेंसी काम करे, वैसे एजेंसी काम करे। आज विक्टिमहुड कार्ड नहीं, रिपोर्ट कार्ड दीजिए केजरीवाल जी। शराब घोटाले में 2.5% से 12% कमीशन, होलसेल प्राइवेट सेक्टर को देना, ब्लैक लिस्टेड और मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज को आने देना, हजारों करोड़ों का मुनाफा शराब कंपनीज को दिलवाना, इस पर जवाब दीजिए। सभा चुनाव के पहले कैसे भी करके अरविंद केजरीवाल जी को अरेस्ट कर लें। इतना ही नहीं, इंडिया अलायंस के कई बड़े नेताओं पर ईडी की कार्यवाही चल रही है, उनको भी अरेस्ट कर ले ताकि मोदी जी को विपक्ष का सामना ना करना पड़े। इसीलिए ये अरेस्ट की जो बातें हो रही है वो कई दिनों से बीजेपी करती आ रही है। दूसरी बात, आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल जी हर इन्वेस्टिगेशन से कोऑपरेट करने के लिए तैयार हैं, बशर्ते कि वो कानूनी प्रक्रिया के तहत हो। अब तक ईडी के जितने भी समन्स आए हैं वो इलीगल हैं और इसीलिए हमने इस समन्स का रिस्पॉन्ड नहीं किया है। देर रात से इनके ट्वीट और वीडियो चल रहे हैं कि आज अरविंद केजरीवाल के यहां ईडी की रेड हो सकती है और उनको गिरफ्तारी हो सकती है। मुझे नहीं पता इनको ये इन्फॉर्मेशन कहां से मिली, लेकिन कानून के तहत कोई कुछ भी होगा तो उसकी पे कार्रवाई होगी। ये जो डर है आपका कि कहीं ना कहीं जिस दिन भी आपको सवालों पे जवाब देने के लिए जाएंगे आप गिरफ्तार हो जाएंगे, यही डर दिखाता है कि आपने भ्रष्टाचार किया है। असली मास्टरमाइंड जो है इस पूरे भ्रष्टाचार के, वो अरविंद केजरीवाल हैं। तो आज नहीं तो कल जब भी होगा अरविंद केजरीवाल साहब, कानून के तहत आप पे कार्रवाई होगी, ये साफ नजर आ रहा है।